Hello everyone, कैसे हो आप लोग? So students, in my new video, I'm going to use a new topic that is your methods of images. That is very important topic of EMT. So in my this video, I'm going to give you tricks how to solve method of images. So let's start. So students, now in my video, I'm going to tell you what is method of images. So now the topic is method of images. तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड इज व्हाट इज इट ये है क्या कैसी प्रॉब्लम आती है इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैसी है व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम दिस इज अ बेसिक थ्री क्वेश्चन दैट कम इन योर माइंड सो नाउ द नेक्स्ट इज हाउ इमेज फॉर्म इमेज बनती कैसे है हाउ इमेज इज फॉर्म्ड नेक्स्ट है हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात कर सकते हैं हम किस पर्टिकुलर रीजन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इमेजेस बन रही हैं सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हमने मेथड ऑफ इमेजेस का लेना है सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रीफ अबाउट दिस टॉपिक कि हमें कैसे है ये क्या है कैसी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम आती कैसे है कैसी इमेज बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेना है पोटेंशियल हम कैसे यूज करते हैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस हम यूज कर रहे हैं हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम कैसे हमारे पास मेथड ऑफ इमेज यूज होगा सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेथड ऑफ इमेजेस लो लेट्स डिस्क्राइब व्हाट इज द मेथड ऑफ इमेजेस what is the method of images so now let's do so first of all the method of image is basically our systematic tool it's a basic trick basic technique to find the solution of uniqueness theorem so method of images is basically technique to find solution of the problems of uniqueness theorem. Now, what is uniqueness theorem? We will do it after few seconds or after few minutes, okay? So now, by method of images, we can calculate potential in particular region, electric field, and many more things. So now, what we can do? So we can do by method of images. What you can find? We can find potential V in any coordinates x, y, z, electric field in coordinates x, y, comma, z, and other things that will be used by uniqueness theorem. And other things of the problem of uniqueness theorem with following boundary condition. With using some boundary conditions, we can use this. Okay, fine. Now the next is what? What are the boundary conditions? So first one is potential will be zero at the conducting surface. That means potential is zero at the conducting surface. That is our first boundary condition. Okay, second, the conducting surface हमेशा क्या होगा? Grounded. So the very important thing is the conducting surface is grounded. Okay, now the next is what? नेक्स्ट इज व्हाट हमारे पास जो पोटेंशियल है वो जीरो को अप्रोच करेगा कैसे जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सो द पोटेंशियल इज फार अवे पॉइंट्स बी जीरो द पोटेंशियल एट जो हमारा पोटेंशियल है दूर पॉइंट पे क्या होगा फार अवे पॉइंट बी जीरो क्लियर Now the next is to solve this kind of problem we use uniqueness theorem when we are unable to solve
Laplace equation, Poisson equation to calculate potential and electric field. So here we use uniqueness theorem. So to solve this kind of problem, we use uniqueness theorem. Here we are unable to calculate potential and electric field using Laplace equation. Del square V equal to 0. That is our Laplace equation. And del square V is equal to minus rho by epsilon. That is our Poisson's equation. So this type of problem, when we are talking about conducting sphere and all, surface and all, we are not unable to solve potential and electric field. What is E? E is equal to what? Minus of del V. So we are unable to solve Laplace and Poisson equation for potential and electric field. We use uniqueness theorem. And wow, now what is uniqueness theorem? So uniqueness theorem is what? If potential at the surface or volume V is specified, then the potential can be determined uniquely for the charge within the volume. What it means? वो क्या बोल रहा है इसमें कि अगर पोटेंशियल हमारे पास किसी सरफेस में वॉल्यूम में स्पेसिफाइड है, मतलब हमारे पास सरफेस और वॉल्यूम में अगर पोटेंशियल की वैल्यू स्पेसिफिक है, हम उसका यूनिकली उसका चार्ज क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. So now the types of problem कैसी आ रही है इसमें? Next is types of problem. तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि दो तरह की प्रॉब्लम आ रही है. सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? द क्लासिकल इमेज मेथड प्रॉब्लम. The classical image method problem. Okay, including grounded conducting plane. Second हमारे पास आ रहा है problem including grounded conducting sphere. First is of plane and other one is of sphere. Problems including grounded conducting sphere. So now what will be the classical method problem? कि हमने ये word तो लिख दिया कि classical image method problem है. Basically classical image method problem है क्या? So now let's describe it. So first is one कि हमारे पास structure कैसा होगा problem का, कैसे question आ सकते हैं. Now I'm just taking one example and I will tell you how many types of question can come from this problem. तो suppose करो कि ये हमारे पास कोई plane है XY plane. Suppose this is our grounded plane. अगर grounded है तो potential will be equal to 0. Suppose करो कि ये हमारे पास Z axis, अगर XY plane है तो this will be our Z axis. तो ZX सपोज करो कि यहाँ तक डिस्टेंस कितना है D, और यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट P है जहां पे हमने क्या रखा हुआ है? कोई सोर्स चार्ज, एंड दैट सोर्स चार्ज विल बी आवर Q. क्लियर? और वो जो सोर्स चार्ज है, ये वाला जो सोर्स चार्ज हमने पॉइंट P पे रखा है, जो डिस्टेंस D पे पड़ा है, वो क्या हो सकता है? इट विल बी पॉइंट चार्ज. ये कोई पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, और it will be any charge distribution. What is the meaning of any charge distribution? That it will be our linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution, or it will be any charge distribution. Okay, now this is our xy plane, that we do grounded, that is a grounded conducting plane. But that plane is our infinite plane.
specific condition. अब देखो, this is our point D. Here is Z is greater than 0 because here Z is positive. This is our Z equal to greater than reason, and this will be Z less than 0 reason. जब भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास कौन सी कंडीशन के होंगे, Z ग्रेटर देन 0. जितने भी हम बात करेंगे सोर्स चार्ज यहीं पे होगा जहां पे, हमेशा याद रखना जो सोर्स चार्ज हमारे पास वहीं पे लोकेट होगा जहां पे Z ग्रेटर देन क्या होगा, 0. क्लियर है? Everything clear to you? Now I'm going to next. So all question will be asked, note down, it is note, all questions will be asked only for that reason where the source charge located in Z greater than 0 reason. Now I am going to tell you some types of question that I'm going to solve in my this video or maybe next video. So all question will be asked for this question. Now for that particular example, I'm going to tell you how many type of question they come arise. Now write down question number 1. Find potential V, X, Y, Z at point P in Z greater than reason. This is our first question. Question number 2. Find electric field E vector, X, Y, Z at point P in this reason. Now the question third will be of type find force on charge Q. Question 4 will be like find induced charge density on XY plane. That is our sigma we have to calculate. Question 5th will be like of find total induced charge on XY plane. Question 6 will be like that of find induced charge. I am telling you just then what type of questions are coming in exam. Now after writing the question, I will tell you how you can approach, what will be the tricks to solve, what will be the methods to solve. So find induced charge within the disk of radius r on XY plane. Okay. Now the question 7 is find energy stored in the Z greater than 0 region. Okay. Now just take a screenshot of that question or write this question in your copy. Okay, now the question number 8 will coming in exam will be like of that. Find the work done. After energy, calculate work done. Find work done to bring charge Q from infinity to the point 0, 0, D. Question 9. Okay, one more thing. Question 7 and question 8 are same. Why they are same? Dekho, in our plus 2 level or in our 11th level, we will calculate work done. And we told that this work done is stored in the form of energy. So that means that work done and energy. Question 7 and 8. In question 7, just take question 7. In question 7, they are asking you what is your energy stored, and in question 8 they are asking you work done. So question 7 and 8 are same. And now in question 9, find velocity of approach of point charge Q. Now the next question is your question number 10. Dependency of velocity
of point charge q on z. बच्चे this question is important. Next question number 11th will be let velocity, suppose करो जो velocity है at z वो हमारे पास कितनी है, वो distance का half at z b v. Find velocity at z is equal to d by 4. Next is question number 12. Calculate time taken by point charges q to hit the grounded xy plane and ignore the concept of gravity. Why they are talking about gravity? Because grounded plane that we are talking about earth, grounded हमेशा earth में होगा. That's why they are talking about gravity. So now before talking about or before discussing about the question and answers, so now we have just know what will be its approach. So let's coming to its approach. Now the first one is approach. So step one, how you can solve? You can solve it using step one. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने ये ग्राउंड प्लेन लिया था, दैट मीन्स जो एक्स वाई प्लेन हमने सपोज किया था वो हमने उसको ग्राउंडेड किया था. सपोज करो कि ये ग्राउंड प्लेन हमारे पास क्या है, एक्ट कर रहा है एज अ मिरर. तो राइट डाउन कंसीडर ग्राउंडेड प्लेन एज अ मिरर. हमने उसको एज अ मिरर कंसीडर अगर कर लिया, सो एंड टेक द इमेज ऑफ सोर्स चार्ज. देखो हमने यहाँ पे जो हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या थी, इमेज थी सोर्स चार्ज की क्यू, वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पे इसकी इमेज बनी, दैट विल बी क्यू, और हमने उसका साइन क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव. एंड टेक द इमेज ऑफ सोर्स चार्ज विद रिस्पेक्ट टू इट. हमने इमेज ली उसके विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज आवर मिरर. अगर मिरर के हम देखेंगे ऑपोजिट हो जाता है, ऑब्वियसली लेफ्ट चेंजेस टू राइट. अगर प्लस क्यू चार्ज है दैट विल बी चेंजेस टू माइनस क्यू चार्ज. क्लियर? So with respect to it and reverse the sign of charge. And reverse the sign of charge. That is our step one. Very easy step कि ground plane को mirror मान लो. अगर हमने mirror मान लिया तो अगर charge Q ले रहे हैं वो charge minus Q हो जाएगा. Clear? Now the next step two is हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन को और फाइंड आउट करेंगे कि क्या चार्जेस में क्या चीजें आ रही है. अगर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. सो रिमूव द ग्राउंडेड प्लेन, रिमूव द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एंड find out the things between two charges. ओके बट देखो बच्चे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट इजिली कर सकते हो, पोटेंशियल कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो, बट बी केयरफुल इन केस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. ये आप नेक्स्ट पता चलेगा कैसे. बी केयरफुल इन एनर्जी स्टोर्ड कंसेप्ट. केयरफुल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से बात करनी है कि कैसे हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है. ओके नेक्स्ट है हमारे पास कि देखो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि चार्ज कैसे लेना है, हमने जो कंडक्टिंग प्लेन लिया था उसको भी रिमूव कर दिया. ठीक है, अब हमारे पास आता है कि इमेज कैसे बनती है, जो हमने इमेज ली है वो बनती कैसे है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड. बच्चे देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आप इसको ट्रिक भी मान लो या कुछ भी करो, इसको बहुत अच्छे से समझो. देखो इमेज हमारे पास, जब भी हमने इमेज को माइंड बनाना है तो हमेशा करो कि जो हमने पोटेंशियल लेना है वो होल प्लेन का लेना है. दैट इज जो ग्राउंडेड प्लेन है उसका पूरे का लेने, मतलब हम उसका पूरे का लेंगे, हम इंडिविजुअल का नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब भी हम बनाएंगे इमेज, इमेज शुड बी फॉर्म, तो कि अपने माइंड में रखो जो पोटेंशियल हमने कंसीडर करना है वो हमने पूरे का प्लेन का करना है. सो इमेज शुड बी फॉर्म्ड
keep in mind that potential whole plane, that is grounded one, should be maintained. वो maintained रखोगे आप. maintained कहाँ पे रखना है? at 0. मतलब हर पॉइंट पे, अगर ये पूरा XY प्लेन है, अगर हमने इसको ग्राउंड किया है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होगा, इस पॉइंट पे भी हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0. मतलब पोटेंशियल को हमने 0 पे फिक्स रखना है. सो दैट इज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट maintained will be equal to 0. Okay, done. Now that means we are talking about the whole plane. Next है, जब भी हम, अब देखो, this is our x axis, this is our y axis, this is our z axis. Okay, मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ. This is our x axis, this is our y axis and this is our z axis. Okay, that means this is, अगर मैं इसको बात करूँ, this will be my yz plane and इसकी बात करूँ, this will be my xz plane. मैंने यहाँ पे बात करी हूँ 2 planes की. Clear? So now let's come next. This is my y axis, this is my x axis and this is my x axis, y axis and this will be my z axis. Okay, अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो मेरे पास चार्ज है, ये दैट विल बी आवर क्यूब. अगर हम इसको ग्राउंड सपोज करो, दिस विल बी माय ग्राउंडेड प्लेन, तो इसको ये क्या हो जाएगा? एक्ट करेगा मिरर. ये अगर प्लस क्यू है, दिस विल बी आवर माइनस क्यू चार्ज, दिस विल बी आवर माइनस क्यू चार्ज. अगर वही हमारे पास जो एक्स जेड और वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन, वो क्या है? हमारे पास ग्राउंडेड है. तो दिस विल टू ग्राउंडेड, अगर ये भी ग्राउंडेड, अगर ये प्लस क्यू है, यहाँ पे इसकी इमेज कितनी बनी? माइनस क्यू. और इसकी अगर बात करूं, माइनस क्यू की इमेज कितनी बनी? प्लस क्यू. अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है, इट विल बी माई माइनस एक्स एक्सिस एंड दिस वन विल बी माई माइनस वाई एक्सिस. क्लियर? दैट विल बी द फिगर ऑफ दैट. अगर हम बात कर रहे हैं, जब भी हमने इमेज बनानी है, पोटेंशियल को हम क्या लेंगे? एक्स जेड प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है. सिमिलरली वाई जेड प्लेन के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0. So while forming images, potential should be 0 at whole xz and yz plane. Clear? This is your important कि हमने कैसे कंसीडर करना है, कि पोटेंशियल को हमने कैसे 0 मानना है, कैसे हमने इमेजेस लेनी है. दैट विल बी प्लस क्यू चार्ज, इट विल बी इट्स मिरर. मिरर का साइन क्या हो जाएगा? चार्ज विल बी टेकन हियर बट टेक इट्स साइन एज रिवर्स. अगर ये प्लस क्यू, इट विल बी माइनस क्यू, दिस विल बी प्लस क्यू, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस. नाउ हमने जब भी इमेज रखनी है, इमेज हमारे पास वहीं बनेगी उसके रिवर्स पे, जहां पे हमने सोर्स लिया है. वेयर वी टेकिंग एज ए सोर्स चार्ज, हमेशा इमेज बनेगी उसके रिवर्स पे. सो इमेज charge won't be located in the region, हम वहां पे नहीं लेंगे जहां पे हमारे पास क्या होगा? where the source is located. won't be located in the region where the source is located. Clear? और हमेशा याद रखना है, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो हमेशा होंगी odd and the number of images should be या will be odd. Clear? Now the next is very important, how to calculate what will be the number of images. Formula for number of images. बच्चे जब भी हमारे पास क्या होंगे? दो सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन होंगे, जो एंगल होगा, देखो जो एंगल है, देखो सपोज करो ये हमारे पास दो ग्राउंडेड प्लेन है, वो दो किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ ज्वाइन है, और जो वो सोर्स चार्ज होगा वो इन दोनों प्लेन्स का क्या होगा? बाइसेक्टर. दिस इज अवर इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, दिस इज अवर सोर्स चार्ज, और इस एंगल का बाइसेक्टर उसका हाफ हाफ बन गया. तो हमारे पास क्या आएंगी? नंबर ऑफ इमेजेस. तो लिखो when
two semi-infinite grounded conducting planes are at angle theta, वो हमारे पास कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, एंड द सोर्स चार्ज q और हमारे पास चार्ज क्या है, इज एट बाइसेक्टर, देन नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, फॉर्मूला 360 डिग्री बाय जितना एंगल है -1, दैट विल बी आवर नंबर ऑफ इमेजेस। और नंबर ऑफ इमेज जैसे हम बात करें, जो नंबर ऑफ थीटा है, थीटा की स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, जहां पे हमारे पास ये इमेजेस ओड बनेंगी वही वैल्यू थीटा की पॉसिबल है, अदरवाइज बाकी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। सो वैल्यूज ऑफ थीटा आर पॉसिबल for which n is equal to 360 by theta minus 1 is equal to odd, वही वैल्यू पॉसिबल है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या आएंगी, थीटा की पॉसिबल वैल्यू आएगी थीटा 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्लियर? ये फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास +2 क्लास ऑप्टिक्स से आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, कि अगर हमने बहुत अच्छे से अपनी +2 लेवल किया होगा, वहां पे ये फॉर्मूला मेंशन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस इन योर रे ऑप्टिक्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन, हाउ, जो हमने जो क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लिखे थे, उनका क्वेश्चन कैसे बन रहा है, देखो। दिस इज आवर XY plane and that XY plane is grounded. Here our Z axis, सपोज करो ये हमारे पास 0,0 डी पॉइंट पे है, बिकॉज XY प्लेन है, पर XY प्लेन x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, वी हैव वैल्यू ऑफ Z एक्सिस। ओके, सो सपोज करो कि हमारे पास ये जो चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास कितना चार्ज पड़ा हुआ है, +q चार्ज, एंड its image will be like of this form, this will be -q, एंड सपोज करो कि हमारे पास कोई P पॉइंट है जहां पे हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, वो P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r1, और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, r2, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, d, और यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है, d, ये तो हमें पता ही है। और ये हमारे पास सपोज करो 0, -d पॉइंट पे पड़ा है काम। क्लियर? दैट विल बी आवर फिगर। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन 1, फाइंड पोटेंशियल Vxyz एट P, ये हमारे पास जो रीजन है z ग्रेटर देन 0 है, ये हमारे पास रीजन है z लेस देन 0, पॉइंट P इन z ग्रेटर देन 0 रीजन। ओके, अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करें, देखो हमने v कैलकुलेट करना है, कहां पे करना है, पॉइंट P पे, और रीजन कौन सा ले रहे हैं, z ग्रेटर देन 0। क्लियर? सो पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस, यही होता है। अब हम इधर बात करें इसकी, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट P, वो -q चार्ज के कारण भी होगा और +q चार्ज के कारण भी होगा, तो वो क्या होगा, kq बाय डिस्टेंस कितना आएगा, r1 प्लस k ऑफ -q बाय डिस्टेंस r2। अब हमने r की वैल्यू लेनी है, सपोज करो जो P है वो पॉइंट कितना है, XYZ, और यहाँ पे पॉइंट कितना है, 0,0,d, तो what you get, r1 will be your root of x square plus y square plus z minus d का whole square. Similarly, r2 will be, this will be of minus answer, x square plus y square plus z minus of minus d का whole square, and here you get under root of x square plus y square plus z plus d का whole square. What will be r2? Suppose करो अगर ये हम इसको a point suppose कर लें और ये हमारे पास b point है, and r2 will be your bp and r1 is your AP। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम पुट करें R1 और R2 की वैल्यू, योर आंसर विल बी हियर, V इज इक्वल टू KQ ओवर अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस के ऑफ माइनस क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस टी का होल स्क्वायर. दैट इज आवर आंसर ऑफ पोटेंशियल. क्लियर? दैट इज वेरी सिंपल वे. नाउ अभी हमने इसका क्या कैलकुलेट, जैसे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया वैसे हमने इसका सेकंड क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. क्लियर अबाउट द फिगर? Any doubt, drop me on comment box. I will explain video on that if you have any doubt. Even I have mentioned my telegram id or email id here. For more details about the course that is running for CSR net June 2021, you can drop me message there. I will tell you the explain way how I'm going to approach and what will be my strategy, as well as how I'm going to give a basic videos on tricks. So soon I'm going to launch a one more important video or more important video, or you can say one more important course only based on the tricks, that how you approach for tricks. This will be a 1 or 2 month course and it will be a very minimum charges. You can see the basic ideas, basic tricks there. So question number 2, electric field निकालनी है at point P for reason this. So electric field will be equal to K Q1 by R1 into R1 cap plus K Q2 by R2 into R1 का square into R2 cap. Now what will be R1? R1 will be xi cap plus yj cap plus z minus dk cap. What will be R1 cap? R1 over R1 का magnitude. So xi cap plus yj cap plus z minus dk cap into you get under root of x square plus y square plus z minus d का whole square. Similarly, you can find the value of R2. So electric field will be equal to KQ. What is Q1 here? Q1 will be plus Q and Q2 here will be minus Q. Over you get x square plus y square plus z minus d का यहाँ पे square था, यहाँ पे 1/2, it will be 3/2 into xi cap plus yj cap plus z minus d k cap. Similarly, plus k q is minus q into what? X square plus y square plus z plus d का whole square into 3/2 into xi cap plus yj cap plus z plus d का k cap. Clear? That will be your answer for electric field. Very easy questions. Okay. Now the next third question. Third question is what? Force on charge q. यही क्वेश्चन था कि कितना हमारे पास चार्ज q. बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? K q1 q2 by r square into r cap. That will be our force. अब देखो टोटल डिस्टेंस है दो चार्जेस. दिस इज प्लस q चार्ज, दिस इज माइनस q. यहाँ पे हमारे पास O था, यहाँ तक डिस्टेंस D था और यहाँ तक भी D था. टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है दो चार्जेस के बीच में? 2D. तो सिंपल फोर्स क्या आएगी? F इज इक्वल टू Q माइनस Q ओवर 2D का होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन इज व्हाट? Z कैप. बिकॉज ये हमारे पास कौन सी एक्सिस थी? Z एक्सिस. दैट विल बी आवर आंसर. सिंपल आंसर. Okay. Now the question number 4. Question number 4 is somehow difficult or somehow easy if you know the concepts. Now the question number 4 is what? Charge density. बच्चे तो charge density हम calculate करते हैं boundary value problem से. Charge density induced at the surface sigma. So solution will be बच्चे sigma is what? Minus epsilon naught curl v by curl n at the surface. अगर हम बात करें जो n कैप है, n कैप क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर वाला लेंगे, यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें जो n कैप है दैट विल बी अवर z, बिकॉज हम z एक्सिस की बात करें, बिकॉज z एक्सिस ही हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में है. सो सिग्मा विल बी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन कर्ल v बाय कर्ल z एट द सरफेस. सरफेस पे क्या है? z इक्वल टू 0. दैट विल बी आवर चार्ज डेंसिटी. अब हमने क्या करना है, जो हमने v इन क्वेश्चन 1 हमने जो v को सॉल्व किया, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम 1.
So sigma is equal to minus epsilon naught curl by curl z kq cap, sorry, kq over what, root x square plus y square plus z minus d का whole square plus k of minus q under root of x square plus y square plus z plus d का whole square. Clear? At the surface that is z equal to 0. अगर हम माइनस एप्सिलॉन आउट, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, टेक दिस डेरिवेटिव, जस्ट राइटिंग द आंसर, यू डेरिवेटिव इट as it is and take your answer. My answer will be minus kq into minus d x square plus y square plus z minus d का whole square plus kq into plus d x square plus y square plus z plus d का होल स्क्वायर एट सरफेस z इक्वल टू 0. अब देखो बच्चे, हमने क्या करना है, z को 0 पुट करोगे, यहाँ पे z 0 पुट करो, यहाँ पे z 0 पुट करो, व्हाट यू गेट माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस के क्यू डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट. Sorry, it will be your 3 by 2. Wait. This will be equal to 3 by 2. This will also equal to 3 by 2. Here also equal to 3 by 2. Plus kq d over x square plus y square plus d square की power 3 by 2. अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 epsilon naught kq d over this x square plus y square plus z square की power 3 by 2. That will be our surface charge density induced. Next is our question number 5th. बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 5th is somehow difficult or somehow easy if you know the cylindrical coordinates. Okay, so total induced charge on xy plane. So what is total charge q? Q enclosed will be equal to sigma enclosed into d. What is sigma? Surface charge density. Okay, what is surface from 4th question? Put value. So you get q enclosed is equal to 2k qd over x square plus y square plus z square की power 3 by 2 into dA. Now students, we are talking about dA. Integration of dA will be equal to dx and dy because we are talking about xy plane. So xy plane में area will be dx dy. Now अभी हमारे पास बात होगी minus infinity to infinity. It will be from minus infinity to infinity because they are semi-infinite plane. So you get minus infinity to infinity minus epsilon naught as it is out, minus infinity to infinity 2k qd plus y square plus z square की power 3 by 2 dx dy. That is our q enclosed. Now we have to solve the value of q enclosed because we have to solve this limits. So before solving these limits, we just convert it into cylindrical coordinates. That is very easiest to solve this method. So now next is cylindrical coordinate. That is our xy plane. For cylindrical coordinates, we have area vector is equal to what? DLS, DL phi, Z cap. And DLS is equal to DS and DL phi is equal to, these are area vector components, S D phi. So you get DA is equal to DS into S D phi Z cap. And at the end you get S DS D phi Z cap, that is your DA. Okay, now the next is what? In cylindrical coordinates, x is equal to cos phi, s cos phi, and y is equal to s sin phi. How can you write it in? See, this is our x, y, and z axis. This is our angle. Suppose we have area element. This is our area element. That is our dA, and that will be equal to of length s, and this is our angle making s. So it will be equal to s cos phi. It will be equal to s sin phi. So now next condition is what? Square and add this. You get x square plus y square is equal to s square. Clear? Now the next step is q enclosed.
minus epsilon naught 2k QD out. Limit will change from 0 to 2 pi, and its limit changes from 0 to infinity. Okay, so now because this will be equal to 1 over s square plus d square 3 by 2 s ds d phi, and limit from 0 to 2 pi d phi equal to 2 pi. We are taking 2 pi out, minus epsilon naught into 2 pi 2k qd 0 to infinity 1 over s square plus d square की power 3 by 2 ds into s. Clear? Now the next step is put s square plus d square is equal to t square. So you get 2s ds is equal to 2t dt and s ds is equal to t dt. Now limit भी से अगर हम पुट कर रहे हैं लिमिट 0, अगर हमारे पास s अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हमारे पास t कितना अप्रोच करेगा, t will approaches to d. अगर हमारे पास s अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, t will approach to infinity. So limit will change from d to infinity. Now the next is what you get, minus epsilon naught 2 pi 2k qd integration d to infinity t dt over t cube, and you get minus epsilon naught 2 pi 2k qd into minus 1 by t d to infinity is equal to qd into 1 by d. After putting the values you can get it. You will get q enclosed is equal to minus q. That is your answer. So students, this is our today's video. I hope you like my video. In my next video, I will solve the next 7 questions of that topic. And now I'm going to tell you one more thing, students. Now, for more queries, I'm getting some queries about the course. Please do text me on my Telegram ID. I will tell you the explain about my course that will be soon started. Okay. Hope you like my video. Just subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.